हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो रिक्रूटमेंट है 2025 उसके लिए जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, उसके लिए टॉपिक 12 कवर कर रहे जो है डायनामिक्स ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो डायनामिक्स ऑफ मशीनरी के यहाँ पे 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये अपना टॉपिक 12th है। 11 टॉपिक ऑलरेडी अपन ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, वैसे ही बता दूं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस टू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डायनामिक ऑफ मशीनरी के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है द इनर्टिया फोर्स इन मशीनरी इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, displacement and time। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एक्सेलरेशन, बिकॉज inertia force arise due to acceleration। ओके, नेक्स्ट सेकंड which principle transform dynamic problem into an equivalent static one by one introducing inertial force। तो देखो ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, डी अल्बर्ट प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल एंड पास्कल लॉ। तो करेक्ट आंसर है डी अल्बर्ट प्रिंसिपल, बिकॉज इट अप्लाइज इनर्शियल फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन टू एक्सेलरेट बॉडी फोर्सेस। नेक्स्ट थर्ड डायनामिक्स ऑफ मशीनरी प्राइमरी स्टडीज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट जियोमेट्री ऑफ मशीन पार्ट, सेकंड फोर्सेस एंड टॉर्क ऑन मशीन मेंबर्स ड्यू टू मोशन एंड एक्सेलरेशन, थर्ड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मशीन्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड forces and torque on machine members due to motion and acceleration, because dynamic involve analyzing forces arising from movement to design machine component। नेक्स्ट फोर्थ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्लाईव्हील इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कांस्टेंट एनर्जी आउटपुट, सेकंड वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ओवर वन रोटेशन, देन थर्ड थर्मल लॉस एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है सेकंड वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ओवर वन रोटेशन, बिकॉज फ्लाईव्हील स्मूथ पावर आउटपुट बाय स्टोरिंग और रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट फिफ्थ द टर्म रिगिड बॉडी डायनामिक मीन्स। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नेग्लेक्टिंग डिफॉर्मेशन इन मशीन पार्ट ड्यूरिंग एनालिसिस, सेकंड कंसिडरिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, थर्ड इंक्लूडिंग ऑल इलास्टिक इफेक्ट एंड फोर्थ फोकसिंग ऑन थर्मल स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट neglecting deformation in machine part during analysis, because rigid bodies do not deform or simplifying force calculation। Next, six, the equivalent dynamical system of rigid body replace it with। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वन partial, second two mass placed at specific point to match mass and moment of inertia, third a continuous mass distribution and fourth none of this। तो correct answer है second two masses placed at a specific point to match mass and moment of inertia, because to simplify dynamic calculation while preserving properties। नेक्स्ट सेवन इनर्टिया टॉर्क इज रोटेटिंग लिंक इज। तो देखो ऑप्शन है टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड टॉर्क ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन, थर्ड टॉर्क रेजिस्टिंग मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली एंड फोर्थ नन ऑफ द वो। तो करेक्ट आंसर है सेकंड टॉर्क ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन, बिकॉज इनर्टिया टॉर्क अपोज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट एट न्यूटन सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे F इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू 12 mv, देन F इक्वल्स टू mg एंड F इक्वल्स टू mv। ये डबल डबल फ्रैक्शंस चेंज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा F इक्वल्स टू ma, मीन्स फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट नाइन फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन फ्लाईव्हील इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑपरेशन, second complete stop of flywheel, third change in mass and fourth change in torque only। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट small change in angular velocity during operation, because flywheel minimize fluctuation to stabilize motion। नेक्स्ट टेंथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन मशीन्स डिपेंड ऑन। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टिफनेस एंड मास, सेकंड साइज ओनली,
थर्ड पावर सप्लाई एंड फोर्थ टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टिफनेस एंड मास। ठीक है। नेक्स्ट 11 इक्विवेलेंट मास इन वाइब्रेटिंग सिस्टम इज। देखो ऑप्शन है मास कॉजिंग वाइब्रेशन, सेकंड कंबाइन इफेक्टिव मास इन द सिस्टम, थर्ड मास एट सेंटर ऑफ मशीन एंड फोर्थ नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कंबाइन इफेक्टिव मास इन द सिस्टम बिकॉज अकाउंट्स फॉर कंबाइन इनर्टिया इफेक्ट। नेक्स्ट 12th द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रेशियो ऑफ मैक्स स्पीड वेरिएशन टू मीन स्पीड, third change in angular displacement, third ratio of max speed to angular velocity, and fourth speed multiplied by torque। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ratio of max speed variation to mean speed because it indicates stability of rotational speed। नेक्स्ट 13 डायनामिक फोर्सेस इन इंजन रिजल्ट फॉर्म। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इनर्टी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, सेकंड कांस्टेंट लोड, थर्ड ल्यूब्रिकेशन एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट इनर्टिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट बिकॉज मूविंग पार्ट जनरेट फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 14 टर्निंग मूवमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिंग टॉर्क विद द क्रैंक एंगल, second power output graph, third speed of flywheel and fourth linear velocity। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट variation of resisting torque with the crank angle because it showed torque changes to design flywheel size। वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 गायरोस्कोपिक इफेक्ट इन मशीनरी अफेक्ट। तो देखो ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ रोटेटिंग पार्ट, सेकंड थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड फोर्थ नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ रोटेटिंग पार्ट बिकॉज गायरोस्कोपिक मूवमेंट इन्फ्लुएंस मशीन बिहेवियर ड्यूरिंग रोटेशन। नेक्स्ट 16 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन अ रोटेटिंग मशीन इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड एक्सिस, सेकंड फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एक्सिस, थर्ड जीरो इन स्टेडी रोटेशन एंड फोर्थ इक्वल टू वेट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एक्सिस बिकॉज इट कॉज रेडियल लोड ऑन रोटेटिंग कंपोनेंट। नेक्स्ट 17 inertia force can be represented on। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऑल लिंक ऑफ मशीन, सेकंड मूविंग पार्ट ओनली, थर्ड फिक्स पार्ट ओनली एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मूविंग पार्ट्स ओनली बिकॉज inertia is generated only by accelerating bodies। नेक्स्ट 18 द फ्लाईव्हील स्पीड फ्लक्चुएशन शुड बी। देखो ऑप्शन है फर्स्ट वेरी हाई, मॉडरेट, वेरी लो, इग्नोर्ड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड वेरी लो बिकॉज लो फ्लक्चुएशन इंश्योर स्टेबल मशीन आउटपुट। नेक्स्ट 19 इक्विवेलेंट इनर्टिया फॉर टू masses रोटेटिंग अबाउट द सेम एक्सिस इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्टिया, सेकंड डिफरेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्टिया, थर्ड प्रोडक्ट ऑफ masses एंड फोर्थ डेसिमल डिफरेंसेस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्टिया बिकॉज टोटल इनर्टिया इज एडिक्टिव। नेक्स्ट 20 द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन मशीनरी इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल स्पीड ऑटोमेटिकली, सेकंड रिड्यूस वाइब्रेशन, थर्ड कंट्रोल टेम्परेचर एंड फोर्थ इंक्रीज पावर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंट्रोल स्पीड ऑटोमेटिकली बिकॉज इट मेंटेन कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिएबल लोड। नेक्स्ट 21 फॉर अ रिगिड बॉडी इन अ प्लेन मोशन हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 1 2 3 and 6। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 3 बिकॉज मोशन अलोंग एक्स वाई एंड रोटेशन अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। नेक्स्ट 22 डायनामिक बैलेंसिंग रिड्यूस। तो देखो ऑप्शन है वाइब्रेशन एंड बेयरिंग लोड, सेकंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थर्ड मास ऑफ मशीन एंड फोर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाइब्रेशन एंड बियरिंग लोड बिकॉज बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूट मास टू रिड्यूस शेकिंग फोर्सेस। Next, 23. In a reciprocating engine, the inertia force is maximum when the crank angle is। तो देखो ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 0 डिग्री मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट इनर डेड सेंटर।
नेक्स्ट 24, द एनालिसिस ऑफ फोर्स ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। तो देखो ऑप्शन है काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, डायनामिक्स, बिकॉज डायनामिक कंसिडर फोर्स एंड मोशन टुगेदर। नेक्स्ट 25, द मूवमेंट ऑफ इनर्टिया ऑफ अ फ्लाईव्हील हेल्प्स इन। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टोरिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग स्पीड, चेंजिंग डायरेक्शन एंड रिड्यूसिंग लोड। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टोरिंग एनर्जी, बिकॉज फ्लाईव्हील स्टोर एंड रिलीज एनर्जी टू स्मूथ ऑपरेशन। वैसे देखिए जनरल नॉलेज, मैकेनिकल, कंप्यूटर अवेयरनेस की पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।